The Section 80C of the Income Tax Act 1961 is very significant. Under this section, investments of up to rupees 1.5 lakh in a financial year are exempt from taxation. Tax saving and wealth building almost always go hand in hand. टैक्स सेविंग आपके इनकम को ऑप्टिमाइज करता है और आपके पास ज्यादा पैसे बचते हैं टू सेव, स्पेंड एंड इन्वेस्ट। इसीलिए टैक्स प्लानिंग इज क्रूशियल। Here's how you can utilize 80C deductions to save tax and build wealth. चलिए देख लेते हैं कुछ popular instruments that provide tax deductions under 80C. 1. Equity Linked Saving Schemes (ELSS). ELSS एक म्यूचुअल फंड स्कीम है with investments in a diverse range of equities. The interest earned is tax-free and compounded annually. इसका लॉक-इन पीरियड है 3 years, the shortest of all investment options under 80C. You can invest lump sum in an ELSS or opt for a monthly SIP. 2. Public Provident Fund. Payments made towards PPF are invested in government bonds and securities. PPF में इन्वेस्टेड अमाउंट, इंटरेस्ट गेन्ड और अमाउंट अपॉन मैच्योरिटी, ये तीनों ही चीजें टैक्स फ्री हैं। PPF का लॉक इन पीरियड है 15 इयर्स, तो ये एक PPF अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। 3. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC). NSC is a fixed income investment scheme by the government of India for individual citizens only. It can be opened with any post office. NSC का 5-year लॉक इन पीरियड होता है और इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड रहता है। The rate is revised every quarter for new deposits. 4. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। आपको इंश्योरेंस कवर देने के अलावा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको टैक्स सेविंग्स में भी हेल्प कर सकती हैं। Any amount paid towards life insurance premium for yourself, your spouse or your children is eligible for deductions. 5. 5-year fixed deposits (FDs). फिक्स्ड डिपॉजिट एक सेफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं अगेंस्ट योर कैपिटल। Any fixed deposit with a scheduled bank for a tenure of 5 years qualifies for deduction under Section 80C. However, interest earned on this deposit is taxable. हमने जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए, उसके अलावा you also can consider options underlined in Section 80C like Employee Provident Fund (EPF), ULIP, National Pension Scheme (NPS), and others. But remember, irrespective of number of investments, only a maximum number of rupees 1.5 lakh can be claimed for the 80C tax deductions. For more resources about investing, visit www.angelbroking.com. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.